Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 52 of this topic, human reproduction. Now, we have been learning the most amazing part of this world, I will say, which is in the human body, that is called as the embryonic development. What I used to say every time, nothing is more miraculous in this world than this embryonic development that is occurring inside the uterus of the mother. Female, I used to say mother. Okay. जो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट हो जाती है किसी भी महिला के या माता के गर्भाशय में, कोख में, उससे बड़ा अद्भुत इस विश्व में कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं. क्यों? Because that is really very well organized, very well disciplined, and really unimaginable, unbelievable process, I will say. करिश्मा कुदरत जिसको कहेंगे. Can you imagine that if somebody will say you that now we are having such type of the structure there, very well developed, and this body has been developed from a single cell called as zygote. अगर किसी को बता देंगे कि हर एक ह्यूमन बॉडी, आज ह्यूमन बीइंग जो दिखता है हमको, उसका जो शरीर हम देखते हैं आज, वो एक ही सेल से बना हुआ है जिसका नाम है zygote. एंड द zygote इज इवन माइक्रोस्कोपिक सेल, आई विल से. उसका डिटेल अगर देखना है तो सो इट इज रियली अनबिलीवेबल. पर हम वही लर्न कर रहे हैं दैट, एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड फैक्ट. वो फैक्ट प्रूव हो गई है. अगर महिला के एम्ब्रियो, इसमें यूटेरस में zygote ही नहीं है, देन नो फीटस विल बी देयर, नो यंग वन विल बी देयर. यानी ये प्रूव्ड फैक्ट है. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द डेवलपमेंट ऑफ दैट सिंगल सेल्ड zygote इनटू द यंग वन लाइक ह्यूमन बीइंग, जिसे हम बेबी कहते हैं, that occurs in a stipulated time period of say 280 days. वो zygote जो है वो एम्ब्रियो तक और एम्ब्रियो से बाद में यंग वन तक कन्वर्ट होने के लिए एक डेफिनेट टाइम पीरियड है, दैट अप्रोक्सीमेटली 9 months, वी विल से 9 months few days. ओके. तो ये इतने डेफिनेट टाइम पीरियड में होने वाला कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है, वो अचंभित करने वाला है. Really unimaginable. And if you will check the developed young one there who has been given birth by the mother, you will find each and every organ almost present there what is present in the human body. Each and every part. Right from the eyelashes, eyebrows, everything, nails, everything, little fingers. ये बाहर भी देखो आप, एक नए जिसने बर्थ लिया है ऐसे बच्चे को जस्ट निहारते रहो, देखते रहो, एंड यू विल सी द दैट अमेजिंग थिंग इन द वर्ल्ड. ओके. छोटे छोटे उसके फिंगर्स है या टोज है, एंड देन दे आर हैविंग द नेल्स देयर, द आईज आर देयर, वेरी नाइस. देन दैट पर्टिकुलरली आईब्रोज आर देयर, आई लैश इज देयर. सो एवरीथिंग इज देयर. एंड हाउ इट इज डेवलप्ड देयर. तो ये ही अमेजिंग पार्ट है. एंड दैट्स व्हाई वो भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में. आज किसी कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाओ आप, बिल्डर के पास, उसको बोलना है दैट नो प्रॉब्लम ऑफ फंड्स, कोई भी हमारे पास फंड्स का प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी लगेगा उतना ले लो. नो प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर, कितने भी लगाने लेबर लगा दो, बट आई वांट दैट माय कंस्ट्रक्शन शुड गेट कंप्लीटेड इन सो एंड सो टाइम पीरियड. उसको 1 साल का टाइम दे दो, समझो हमको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, एंड यू विल फाइंड दैट वर्क विल नॉट गेट कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम पीरियड. अगर आपके बिल्डर ने बता दिया है कि दिसंबर में आपको पोजीशन मिलने वाला है, तो डेफिनेटली वो दिसंबर में नहीं मिलेगा, वो जाएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून तक या और भी दूर. और मिल ही गया तो उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम होंगे. And that's why this nature, that means creative work is not so much simple. Okay, that work is done here by this. Now we have studied that
three germinal layer stage is formed. At that time, what is happening there? At that time, the spherical shaped embryo gets flattened and converted into this human being like structure. ये भ्रूण अभी बन गया है, उसे फीटस कहते हैं. ये जो ऊपर दिखा रहा हूं मैं, दैट विल बी अम्बिलिकल कॉर्ड, हम देखने वाले, बाय विच इट इज अटैच्ड टू द यूटेरस ऑफ द दैट मदर, दैट प्लासेंटा स्ट्रक्चर, वो हम लर्न करेंगे. But now this fetus will have miniature structures of almost all kind developed from that stem cells of the ectoderm, mesoderm, endoderm. So fate of three germinal layers जो हमें actually this article is also not given in the CBSE or NCERT book. I will again mention you. किस लेयर से क्या बन रहा है ये नहीं दिया है. Okay, but the references are there when we learn further different topics. It has got embryonic origin of ectoderm, it is ectodermal in origin, it is mesodermal in origin, it is endodermal in origin, ऐसा कहते हैं. तो वो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता क्या है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ. So that will not be a wastage, but in brief we shall mention that. तो ectoderm का क्या है देखो. The parts develop from fate of three germinal layers means parts develop from that. Parts developed from these three germinal layers. ये तीन germinal layers से जो parts बनते हैं वो ectoderm से क्या बनता है? Particularly epidermis layer of the skin. Skin has got two layers, we know, epidermis layer and the dermis layer. Okay. Then epidermis layer of the skin है, then particularly all sense organs. Sense organs जो है, even nonsense person को भी होते हैं. Particularly I will say eye, then ear, then particularly nose, then skin and tongue. Almost all I will say. Okay, tongue is particularly developed from endoderm. So this ear also, middle ear is developed from mesoderm. Okay, so nearly all sense organs, most of the sense organs like this, eye, ear, nose, skin. अब eye, ear कहते तो eye जो है उसके जितने भी parts हैं हम लर्न करेंगे sense organs में. Eye has got the parts like conjunctiva, cornea, retina. They all are developed from lens. All are developed from eye, that ectoderm layer. ईयर में पर्टिकुलरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर जो है वो उससे बनता है. मिडल ईयर इज फॉर्म फ्रॉम दैट मेसोडर्म. नोज बनाया है, स्किन का एपिडर्मिस बन गया है, डर्मिस इज फॉर्म बाय द मेसोडर्म. ओके, देन आफ्टर दिस आल्सो डेवलप्स द एंटायर नर्वस सिस्टम. पूरे नर्वस सिस्टम को ये बना देता है. ओके, यानी नर्वस सिस्टम बोली तो पूरे पार्ट्स आ गए. कौन से पार्ट्स आ गए? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ऑल. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर पर्टिकुलरली फॉर्म. और स्किन के जो भी स्ट्रक्चर्स है, हेयर आर देयर, नेल्स आर देयर. ओके, सो ये पूरे स्ट्रक्चर्स उससे ही बनते हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय द ectoderm layer of the that particular body cavity. So ये अच्छी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड बोल का जो है उसका पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय व्हाट इज दैट ectoderm. तो ये अच्छी तरह से ध्यान में रखो. अब मेसोडर्म से मेजर पार्ट बन जाएगा दैट पर्टिकुलरली द डर्मिस लेयर ऑफ स्किन. Then mesoderm also forms all that muscular tissue, entire all kind of the muscles there, cardiac muscles, then that smooth muscles, striated muscles, पूरे muscles यही बनाता है mesoderm. Then that particularly connective tissue of all kinds will be developed from mesoderm layer. Then that systems like circulatory सिस्टम इसने बनाई है. ओके, देन यूरिनोजेनाइटल सिस्टम यानी यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव यूरिनोजेनाइटल सिस्टम्स, ये भी इसने बनाए हैं.
ओके, स्केलेटल सिस्टम भी इसने बनाई है, स्केलेटल सिस्टम। यानी क्या हो गया इसका मतलब ध्यान में रखो, स्केलेटल सिस्टम बोलते तो बोन आ जाता है, स्केलेटल सिस्टम बोलते तो कार्टिलेज आ जाता है, यूरिनोजेनिटल बोलते हैं तो किडनी आ जाती है, देन पर्टिकुलरली गोनाड्स आ जाते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। सो अगर एमसीक्यू आ गया, टेस्टिस आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, हार्ट इज, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी इसमें हार्ट आ जाता है, देन द ब्लड आ जाता है, लिम्फ आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, सो दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, और एंडोडर्म ने जो बनाया है, दैट इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट वॉल ऑफ गट या एलिमेंट्री कैनॉल, एलिमेंट्री कैनॉल या गट जिसे कहते हैं, इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर जो है। ओके, ऑल्सो इट इज फॉर्मिंग द दैट डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स देयर, जिसमें थायराइड ग्लैंड है, जिसमें पैराथायराइड ग्लैंड है, particularly the gland like thymus gland, then that particularly the part of the what to say that anterior pituitary, ये बहुत ही important glands जो है, they are formed by this endoderm. Okay, then some of the parts of the excretory system like urinary bladder, that is formed by endoderm, then that part like the tongue, that is formed by the endoderm. ये endoderm ने बनाया है. So I hope you are getting it. Why I have given this? Because some of the times you will find MCQ there. अब उस बुक में तो एनसीईआरटी बुक में रिप्रोडक्शन टॉपिक में ये नहीं दिया है, पर क्यों क्वेश्चन आएगा फिर? बिकॉज दैट रेफरेंसेस हैव बीन टेकन इन डिफरेंट टॉपिक्स. तो वहां पे जब आता है तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ये एंडोडर्मल ओरिजिन समझ में नहीं आता. दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस आर्टिकल हियर. I definitely know that you will be beneficial of this. Okay, so I'm confident you have understood this part properly. We shall meet again in our next video. Do like and share this lecture, this video to your friends. Thanks a lot.